Students, today we are going to study the next topic of class 11 chemistry, chapter structure of atom. Topic quantum mechanical model of atom. This is the latest model which we are following. The first model, that was Thomson's atomic model, second model was Rutherford atomic model, and the next model was Bohr's atomic model, and afterward the next atomic model came into existence, and that is called quantum mechanical model of the atom. And what are the main postulates of this model? The first point is the energy of electrons in atom is quantized. Every electron which is found in the shell, that has the unique amount of energy, और उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है. Whatever is the energy of the shell, the electron also have the same energy. So first point, the energy of electrons in atom is quantized. Quantized का मतलब fix. Second point, the existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wave-like properties of electrons. The concept of this quantized energy gives the direct result of the wave-like properties. It means it gives the evidence about the wave character of electron. Third point, both the exact position and exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously. It means the position of the electron and the velocity of the electron at the same time we cannot determine accurately. If we want to know the position of the electron, then we cannot find the velocity of the electron, and if we find the velocity of the electron, then we cannot get an idea about the position of the electron. It means at the same time the position and velocity of the electron cannot be measured accurately. If one thing we want to make certain, the another thing becomes uncertain. Fourth point, an atomic orbital is the wave function psi for an electron in an atom. As I have told you that when the electrons are considered in the particle form, then we can say very clearly the electrons revolve around the nucleus in the well-defined circular path. But when the electrons are considered in the wave form, then the presence of wave that remains in a region where the electrons are most probably be found, and that region is called orbital. For example, this is the nucleus of an atom and this is the first shell. So when we consider the electron in the particle form, then we say very clearly that this is the electron and this is revolving around the nucleus in the well defined circular path, that is called orbit or energy level or shell. But when we say and when we consider the electron in the wave form, then the presence of electron that remains in this region, and this region which is found between the nucleus and the orbit, that region is called orbital. And according to the wave character, according to the wave property, orbitals are only the places where the electrons are most probably be found. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं, एंड वेव प्रॉपर्टीज को हम लोग लोकेट नहीं कर सकते. तो व्हेन वी कंसीडर द इलेक्ट्रॉन द वेव फॉर्म, we cannot tell exactly that this is the electron or this is the electron or this is the electron or this is the electron, and but we say that electrons are everywhere. So as an example I have told you in the previous sessions that जैसे sound waves आपके कमरे में होती हैं, तो when we are playing the sound system, then sound waves are everywhere in the room, and we cannot say exactly where are the waves, but we know that waves are present everywhere in the room. तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में कंसीडर करते हैं, then this electron in the wave form is present everywhere between the nucleus and the first shell, and that is called orbital. So what are the orbitals? Orbitals are the region in the space where the electrons are most probably be found. अब इस इलेक्ट्रॉन के जो वेव कैरेक्टर है
उसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज होता है एंड दैट इज कॉल्ड साई, एंड दिस साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन. This psi defines the intensity and the density of the electron in the orbital. So this is the sense of the fourth point. An atomic orbital is the wave function psi for an electron in an atom. The fifth point, from the value of psi mod square, one symbol is psi and one symbol is psi mod square. According to the 11th class knowledge, you can think that psi and psi square, that has the same meaning, but it has the difference also that you will study in the higher classes. But at this time you can keep in the mind that psi and psi square, that has the same meaning. So psi mod square, that also defines the intensity and the density of the electron in the orbital, and that is why the point is written here. From the value of the psi mod square at different points within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where the electrons will most probably be found. यानी psi mod square हमें क्या बताता है? psi mod square हमें बताता है the existence of the electron in an orbital where the electrons are most probably be found. Now next our law is Heisenberg uncertainty principle, and that is also very important law, Heisenberg uncertainty principle, and this law is based on the third point of the quantum mechanical model of the atom. And what was the third point? Both the exact position and the exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously. Heisenberg said the same statement, and he said that it is impossible to determine the simultaneously the exact position and the exact momentum or velocity of an electron. It means at the same time the position of the electron and at the same time the velocity or momentum of the electron we cannot find accurately. If one thing we want to make certain, then the other thing become uncertain, and mathematically this can be expressed this way. This is delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. h is the Planck's constant, 4 is the numeral, and pi is also a constant. तो यहाँ पर डेल्टा x into डेल्टा p is greater than or equal to h upon 4 pi. Here delta x is called uncertainty in the position and delta p is called uncertainty in the momentum. देखिए this h upon 4 pi, that is as a whole constant, because h is constant, 4 is also numeral, that is also constant, and pi is also constant. Suppose इसकी जो वैल्यू है constant and that is 200, ठीक है, और जो डेल्टा x है मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 50, और जो डेल्टा p है, दिस इज डेल्टा p, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 4, ठीक है, तो 50 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 200. एंड सपोज वन थिंग, यानी कि डेल्टा x, सपोज वी वांट टू मेक इट सर्टेन, इसको और सर्टेन करना चाह रहे हैं, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे. तो जैसे इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखिए क्या होगा, this we make 100, then the delta p that was 4 that will decrease and this will become 2, but the product remain constant and that is 200. So one thing I have made certain, the other thing has become uncertain. अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, डेल्टा x की वैल्यू, एंड आई मेक इट 200. जब इसको 200 करेंगे तो ये जो डेल्टा p की वैल्यू है वो आपकी 1 आ जाएगी. इसका मतलब हमने डेल्टा x को जितना सर्टेन किया तो डेल्टा p की वैल्यू उतनी ही अनसर्टेन हो गई, बट द प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 200. सो दैट इज द सेंस ऑफ दिस ऑल. As we know, p is the momentum and p is equal to mv. m is called mass of the electron, v is called velocity of the electron. तो हम क्या करेंगे, this is delta x, और जो हमारा डेल्टा p है, in place of p I write mv equal to और greater than h upon 4 pi. अब यहाँ पे जो m है that is mass of the electron and that is also constant. तो डेल्टा x m को बाहर ले लेंगे और अंदर आपका बचेगा डेल्टा v is greater than or equal to h upon 4 pi. अब ये बचा हमारा डेल्टा x और ये आपका डेल्टा v, जो m है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे एंड इट विल बिकम h अपॉन 4 पाई m. तो फाइनली वी गेट दिस एक्सप्रेशन which we can use for the numerical purpose. Delta x is called uncertainty in the position, delta v is called uncertainty in the velocity is greater than or equal to h upon 4 pi m.
Now, what is the significance of Heisenberg uncertainty principle? It rules out the existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. Heisenberg का जो concept था, that also defines the wave-like character of the electron, and it rules out the concept of definite path or orbit. मतलब ये जो बोहर ने बताया था कि around the nucleus there are the various path are called, they are called orbits और shell और energy level, उस concept को ये rule out करता है और उन orbits को नाम देते हैं trajectories. तो it rules out the existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. Now, limitation. What is the limitation? This Heisenberg uncertainty principle that is used for the microscopic object and that is negligible for the macroscopic object. मतलब this is applicable only for the microscopic object like electron, और कोई बड़ा object है उसके लिए applicable नहीं होगा. Now, next our relationship that is also very important, and that is de Broglie expression. De Broglie was a scientist. It is written like that. De Broglie proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave like property. So as already I have explained you and defined you that electrons they behave like the particle form as well as like the wave form. तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इस वेव करेक्टर और इस पार्टिकल करेक्टर को कंबाइन किया, एंड आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द करेक्टर ही मेड ए रिलेशनशिप. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप? एंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. लैम्डा इज द करेक्टर ऑफ द वेव एंड पी इज द करेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दैट मेनली डिफाइंस द मोमेंटम. तो मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का होता है और जो लैम्डा होता है वो किसी वेव का होता है. इट मीन्स इफ वी नो about the momentum of the electron, then we can calculate the wavelength of the electron, and if we know the wavelength of the electron, then we can get to know about the momentum of the electron, and h is called Planck's constant. और यहाँ पर जो p है that is equal to mv, then we may get a relationship lambda is equal to h upon mv. So this is called de Broglie relationship, and that mainly defines the relationship between the wave character and the particle character of the electron. Next, our topic is arrangement of electron in shells or subshell. So far we know this only, that the electrons are found in the shell, and these electrons they always revolve around the nucleus in the well defined circular path, as the Bohr told. Bohr said this is the nucleus, and around the nucleus there are the various path are there, circular path, in which the electrons always revolve. This way. But afterwards, after the quantum mechanical model of the atoms, the scientists they tried to find out that inside the shell what is there, because when we consider the electron in the wave form, then this is not sufficient to say that electrons always revolve around the nucleus in the well defined circular path. क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल फॉर्म में कहेंगे तब हमें ये कहते हुए अच्छा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन द पार्टिकल फॉर्म एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ. बट व्हेन वी कंसीडर द इलेक्ट्रॉन इन द वेव form, then it is not sufficient to say. So in the wave character where the electrons are really found, so for that the scientists they try to find out the presence of electron inside the shell, और तब उनको पता चला कि जो शेल होते हैं उनके अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड सबशेल. सबशेल के अंदर कुछ और पार्टीशंस होते हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स आर द रियल प्लेसेस वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड. So to understand easily the concept of shell, subshell and orbital, I am giving you one example. Suppose this is the one engine of a train, and this engine is just like the nucleus of the atom, and after this is the first bogie of the train, and this first bogie has no chamber or no compartment, and the second bogie of this
that has two chambers, one for male and one for female. After this, there is one another bogie, and this bogie has three chambers, one for male, one for female, and one for kids. And now afterwards, this train has one more bogie, and this bogie has four chambers this way, one for male, one for female, one for kids, and maybe one for soldiers. ठीक. So this is the engine. After engine, the first bogie has no division, no chamber, no compartment. As a whole, it is one. The second bogie has two compartment, third bogie has three compartment, and the fourth bogie has four compartment. And in the compartment inside that, what is there? Inside that berths are there. जैसे ये मेल एंड फीमेल है तो यहाँ पर बर्थ होगी, ये बर्थ होगी, ये बर्थ होगी, ये बर्थ होगी. इसी तरीके जैसे ट्रेन में बर्थ होती हैं उस तरीके से ये बर्थ होती हैं. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एटम का कॉन्सेप्ट होता है. अब हम एटम को डिफाइन करेंगे और इसी के बेस पे पहले से समझ लिए. बोगी है, बोगी के अंदर कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर बर्थ है. इसी तरीके से जो एटम होता है, बोगी इज जस्ट लाइक द शेल. तो जैसे बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही शेल के अंदर सब शेल होते हैं. कंपार्टमेंट में बर्थ होती है और सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं. देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, this is the second shell, this is the third shell, and this is the fourth shell. First shell, this is the first shell, second shell, third shell, and fourth shell. This is called K. This is called L. This is called M, and this is called N. First shell, just like the train I have given you example, first shell has no chamber, no compartment. But the second shell has two compartments. One is called S and one is called P. Since both these subshell they belong to the second shell, so we write as 2s and 2p. The third shell has three compartments. One is called S, one is called P, and one is called D. And since these three subshell they belong to the third shell, so we write 3s, 3p, and 3d. The fourth shell has four compartments. One is called S, one is called P, one is called D, and one is called F. The S subshell, P subshell, D subshell, F subshell, since they belong to the fourth shell, so we write 4S, 4P, 4D, and 4F. So second shell has two chambers, they are called two subshells. Third shell has three chambers, they are called three subshells. और जो फोर्थ शेल है दैट हैज फोर चैम्बर्स एंड दे आर कॉल्ड फोर सबशेल्स. तो जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने सबशेल होंगे? उसके अंदर केवल एक सबशेल होगा एंड दैट इज एस. एंड सिंस इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट शेल सो इट इज कॉल्ड 1s. तो जो पहला शेल है उसके अंदर कोई भी चैम्बर या कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब जो शेल है वही सबशेल है. तो वेदर यू से एस के शेल और यू से एस सबशेल,
दैट हैज द सेम मीनिंग, मतलब K शेल के अंदर एक ही सब शेल है और वो सब शेल S सब शेल कहलाएगा। तो ये 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो पहले हमने पढ़ लिया शेल एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टडीड द सब शेल। अब सब शेल के अंदर होती है बर्थ एंड दीज बर्थ आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब हम पढ़ेंगे कि ईच सब शेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। देखिए जो 1s सब शेल है दैट हैज ओनली वन बर्थ, दिस, and this one berth is called s orbital. 2s also has one berth and that is also called as s orbital. But जो p subshell है that has 3 berth and it means they have the 3 orbitals. इसी तरीके जो थर्ड शेल का s है that also has only one berth or one orbital. p has 3 orbital but the d subshell has 5 orbitals, 1, 2, 3, 4 and 5, like that. 4s subshell has only one orbital and that is called s orbital. p subshell has 3 berth or 3 orbital, or 4d has 5 orbital, 1, 2, 3, 4, 5. और जो f सबशेल है दैट हैज एज ए होल 7 बर्थ और 7 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This way, and these squares which I have made, they are called orbitals, and these orbitals are the actual places where the electrons are found. जैसे एक बर्थ होती है तो व्हेन वी हैव द रिजर्वेशन, तो एक बर्थ पर कितने लोग लेटते हैं? नॉर्मली वन। लेकिन कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में, वी गिव सम एक्स्ट्रा मनी टू द टीटी एंड देन वन मोर पर्सन आल्सो कैन बी लेड। तो उसी तरीके से यहां पर जो बर्थ होती है दैट इज द ऑर्बिटल। ईच ऑर्बिटल एकोमोडेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है दैट स्पिन्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है दैट स्पिन्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट शेल हैज 1 सबशेल s और s सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। So this is the first shell and this first shell has maximum 2 electron. Now see the second shell में जो s subshell है that has only 1 orbital, जो p subshell है that has 3 orbitals. This s orbital also has the 2 electron, one spins in the clockwise, one spin in the anti-clockwise. उसी तरीके जो p subshell है that has 3 orbital, इसमें एक आपका clockwise, एक anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. तो the second shell has total how many orbitals? 4, and each orbital has 2 electron, so total 4 orbital has 8 electron, and this is the reason that the second shell maximum can accommodate 8 electron. Now we come to the third shell. Third shell में has 3 subshell, 3s, 3p and 3d, and these 3s, 3p and 3d has total how many orbitals? 1 here, 3 here and 5 here. It means total 9 orbital, and 9 orbital maximum can accommodate 18 electron, and this is the reason that we have studied so far that the third shell maximum can accommodate 18 electron. There is no place for the 19th electron. अब बात करते हैं फोर्थ शेल की. फोर्थ शेल हैज 4 सब शेल, यानी कि 4s, 4p, 4d, 4f. 4s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल. इट मीन्स टोटल ऑर्बिटल्स आर 16, and these 16 orbital maximum can accommodate 32 electron, and that is why we have studied so far that fourth shell maximum can accommodate 32 electron. और उसके बाद जो फिफ्थ सेल है, 6th cell and 7th shell, they also can accommodate maximum 32 electrons.
तो 32 इलेक्ट्रॉन्स इज द मैक्सिमम लिमिट, लेस देन दैट पॉसिबल बट मोर देन दैट नॉट पॉसिबल. If you have understood this concept, now we are going to our notes so that easily we can understand the remaining things. देखिए, first shell is called K shell. K shell has only one chamber as a whole and that is called 1s subshell, and 1s subshell has only one orbital and one orbital that is called s orbital, and these s orbital has maximum 2 electron. The second shell has two subshell that is 2s and 2p. 2s में 1 orbital, 2p में 3 orbital. तो total 4 orbital and 4 orbital maximum can accommodate 8 electron. Now third shell has 3 subshell और 3 subshell में जो 3s है that has only 1 orbital, p subshell has 3 orbital, d subshell has 5 orbital. So total 9 orbitals are there and 9 orbitals can accommodate maximum 18 electron. Now fourth shell has 4 subshell that is s, p, d, f. S has 1 orbital, p has 3 orbital, d has 5 orbital, f has 7 orbital, total 16 orbital. It means total 32 electrons. अब हम आपसे पूछें कि इस पूरे डिस्क्रिप्शन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबशेल्स यू हैव स्टडीड. तो वी हैव स्टडीड 4 टाइप ऑफ सबशेल, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल. और हम आपसे पूछें कितने तरीके के ऑर्बिटल आप पढ़ चुके हैं. तो ऑर्बिटल्स आर आल्सो 4 टाइप. वन टाइप ऑफ ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल बिलोंग टू एस सबशेल. पी ऑर्बिटल 3 टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल बिलोंग टू पी सबशेल. डी ऑर्बिटल 5 types of d orbital belong to the d subshell, और f orbital 7 type of f orbital belong to f subshell. तो आपसे पूछें कितने टाइप के ऑर्बिटल हैं. तो ऑर्बिटल भी आपके 4 टाइप के हैं. 4 टाइप के सबशेल, 4 टाइप के ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल. अब हम पढ़ेंगे द शेप्स ऑफ द s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल कि इनके शेप कैसे हैं. देखिए, जो शेप ऑफ s ऑर्बिटल है वो आपका स्फेरिकल होता है. ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, और इसके बीच में जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल. तो ये आपका ऑर्बिटल हो गया. ये पूरा रीजन यहां से यहां तक ये सब आपका ऑर्बिटल है. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो नियर टू द न्यूक्लियस इट इज लिटिल डेंस, लेकिन एज वी मूव फार फ्रॉम द न्यूक्लियस द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो shape of the s orbital is spherical, so remember. Now shape of the p orbital, जो p subshell है that has 3 orbitals and उनका जो orbital का shape है वो होता है डम्बल shape, and p subshell has 3 orbital. तो all 3 orbitals are differ in their axis. One lies along x axis, one lies along y axis, one lies along z axis. On that basis they are defined as px, py and pz. Now the shapes of d orbital, जो d orbital के shape हैं that is double dumbbell, and these double dumbbell shapes of d orbitals they are also differentiated on their axis. एक डबल डम्बल होता है x और y के लॉन्ग, तो इसको नाम देते हैं dxy. एक होता है x और z के लॉन्ग, तो इसको नाम देते हैं dxz. एक होता है y और z के लॉन्ग और इसको नाम देते हैं dyz. और इन डम्बल शेप जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लूप्स, ये जो लूप्स हैं आपके ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं. देखिए, दिस इज द एक्सिस, दिस इज एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस. तो आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल ऑफ द डी सबशेल जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें लूप्स होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस. तो these 3 orbitals in which the loop of orbital lie in between the axis, उनको एक स्पेशल नाम देते हैं and that is called T2G orbitals. T2G orbitals ऐसे लिख सकते हैं इसको, T2G orbitals. और जो रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स हैं दे आर लाइक दैट.
जो रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल है उसमें एक जो डबल डम्बल d ऑर्बिटल है दैट आल्सो लाइज अलोंग x एंड y एक्सिस। आप देखिए जो ये वाला है ये भी आपका x और y के अलोंग है, इन विच द लूप्स आर फाउंड इन बिटवीन द एक्सिस, और यहां पर जो आपका है यहां पर भी आपके x और y के अलोंग है, लेकिन जो लूप्स हैं दे रिमेन ऑन द एक्सिस, और इसीलिए इसको नाम देते थे dx² y²। So if it is written somewhere dxy, it means double dumbbell orbital of d subshell in which the loops are found in between the axis, and if it is written dx² y², it means the loops of the d orbital of the d subshell they lie on the axis। जो हमारा 5th ऑर्बिटल होता है उसमें 1 डम्बल दैट रिमेन्स ऑन द एक्सिस, और जो सेकंड जो डंबल होता है वो उसके चारों तरफ एक रिंग बना लेता है इस तरीके के। तो जो हमारी फर्स्ट डंबल है दैट लाइज अलोंग z एक्सिस, इसीलिए इसको नाम देते थे dz²। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनमें लूप्स आर फाउंड इन बिटवीन द एक्सिस, और इसीलिए इनको नाम देते हैं T2G। और ये वाले जो 2 लूप्स हैं इसमें जो लूप्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस, तो इसको नाम देते हैं EG ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल्स, it is written like that, EG orbitals, and downside it is mentioned also the above set of 2 orbitals are called EG orbitals in which the loops of orbitals lie on the axis। So I hope all the things which I have explained you that is clear to you. Thank you.